Hello guys, welcome to you all to Law Minds channel. Today we learn about examination of witnesses. Today we will have an introduction of examination of witnesses and its objectives and its types and provisions, its principles, and finally the conclusion. I hope this video will make you clearly understand that what is examination of witnesses. Now, starting with a crisp introduction of what is examination of witnesses, it is considered as a very crucial ingredient into the court proceedings. In both cases of criminal and civil in nature, the testimonies of the witnesses are considered as the most relevant when it comes to the part of evidence. The laws of examination of witnesses in an Indian court is discussed in Indian Evidence Act 1872, beginning from the section 137 to section 166. Now, as written above, examination of witnesses, it is a stage in trial which checks the credibility and the accuracy of the witnesses. Now, what is credibility and access to accuracy of witnesses? जब कोई इंसान क्रॉस एग्ज़ामिनेशन के लिए बुलाया जाता है तो उनसे कई सवाल किए जाते हैं। अब उन सवालों से उसकी कंसिस्टेंसी या उन्होंने सच बोला है या नहीं, उनके प्रीवियस स्टेटमेंट्स और अभी के स्टेटमेंट्स कोलाइड कर रहे हैं कि नहीं, और कि वो कहीं और कि आर दे हाइडिंग एनी फैक्ट और नॉट. It is done in this stage. Okay, so it is mainly to uncover the truth which may be left or which may be kept hidden. Now we'll learn about objectives of examination of witnesses. Getting pertinent and reliable information about the subject at hand is the goal of questioning witnesses in court. Attorney seeks to establish fact, elucidate events, and reveal the truth through interrogation. In order to provide evidence, verify the accuracy of claims, and create a strong story that bolsters and the examined parties' legal arguments, witnesses questioning is an essential tool in order to ensure that the court has thorough grasp of the events under consideration while maintaining the values of the justice and rule of law. This procedure is crucial for the fair and just resolution of disputes. Now, this paragraph says that the main objective and the main goal of examination of witnesses is to learn the facts and the truth by interrogating the witness, which means कि किसी भी विटनेस से सच्चाई को पूरी तरीके से बताने के लिए और पूरी तरीके से अगर उन्होंने कोई बात छुपाई है उसको सामने लाने के लिए ये एग्ज़ामिनेशन ऑफ विटनेसेस जो है किया जाता है कोर्ट में, और ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंडर किया जाता है. ऐसे किसी भी कंडीशन में ऐसा नहीं होता कि विटनेस को किसी भी तरीके का प्रॉब्लम हो या किसी भी तरीके की दिक्कत विटनेस को हो. Another main objective of examination of witness is getting a strong grasp on the facts and the truths that the witness has said beforehand and is saying now, and whether the expressions, whether the way of his talking, and whether the things he's saying currently and the thing he said previously are matching. All of these stages are judged in this process. I hope you people understand. I hope it is completely understandable. Now we'll discuss about the types of examination. Basically, this is done in 3 stages. First is called as examination in chief, which is done by the party who calls the witness.
जिन्होंने विटनेस को बुलाया है वो पार्टी जब एग्ज़ामिनेशन करती है तब उसको एग्ज़ामिनेशन इन चीफ बोलते हैं. Then is the step called cross examination, which is a step which is done by the adverse party. Like if I have called my witness, then first of all I'll do the examination in chief, then the opposite party will do the cross examination. मतलब अगर मैंने एग्ज़ामिनेशन इन चीफ अपने विटनेस का करा है तो जो सामने वाली पार्टी है वो अब क्रॉस एग्ज़ामिनेशन के लिए ओपन है कि वो आके मेरे विटनेस से क्रॉस एग्ज़ामिनेशन ले सकती है. एंड द थर्ड इज़ री एग्ज़ामिनेशन. इट इज़ ए सब्सिक्वेंट टू द क्रॉस एग्ज़ामिनेशन बाय द पार्टी हु कॉल्ड द विटनेसेस. अब ये जो स्टेप है ये हमेशा नेसेसरी नहीं है कि होगा ही होगा, पर अगर जिन्होंने विटनेस को बुलाया था वो वापस से विटनेस को एग्ज़ामिन कर सकती है क्रॉस एग्ज़ामिनेशन के बाद. अगर उनको कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट या तो उनको कोई और चीज़ जाननी हो तो वो इस स्टेप में कर सकते हैं. अब वाई दीज स्टेप्स आर इम्पॉर्टेंट. कोई भी चीज़ इफ़ वी डू इट इन अ क्रोनोलॉजी ऑर्डर then it would give us a better result. That's why first एग्ज़ामिनेशन इन चीफ, सामने वाला मतलब मैंने अपनी पार्टी से विटनेस को बुलाया, मैंने उनको एग्ज़ामिन किया, देन सामने वाली पार्टी ने उनका एग्ज़ामिन किया क्रॉस एग्ज़ामिनेशन के स्टेज में. देन मैं अगर चाहूँ, अगर मुझे और कोई डाउट हो तो मैं री एग्ज़ामिनेशन में वापस उस बुलाई हुई पार्टी से, बुलाई हुई विटनेस से मैं उनसे वापस से एग्ज़ामिनेशन करा सकती हूँ. I think you people are getting this. Now we'll discuss about the main provisions of examination, which is discussed in Indian Evidence Act 1872 from section 137 to section 160. Starting with section 137, it is just the chronology or the order in which examinations should take place, which is that is first examination in chief, then cross examination, then re-examination, nothing other than that. Then comes section 138, which says that the process by which the witnesses are to be examined. Okay, वो तरीका जिससे विटनेसेस को एग्ज़ामिन करा जाएगा. This section mainly focuses on the examination in chief, which is the first step in process of examination, but indirectly it relates to the process of cross examination by specifying the sequence of producing witnesses. पर indirectly ये क्रॉस एग्ज़ामिनेशन के प्रोसेस को स्पेसिफाई करता है कि क्रॉस एग्ज़ामिनेशन कैसे कैसे करी जाए. नेक्स्ट है सेक्शन 139, which allows the cross examination of a person who produced, sorry for the spelling mistake here, it's written produced, actually it's produced, which of the person who produced a document in court. So अगर किसी इंसान को कोई डॉक्यूमेंट लेके बुलाया जाता है, उन्होंने कोई डॉक्यूमेंट शो किया है कोर्ट के सामने, तो ये सेक्शन अलाउ करता है कि उस इंसान की भी क्रॉस एग्ज़ामिनेशन की जा सकती है. ओके, नाउ सेक्शन 140, it talks about the character and reputation of the person in society. This section, जो ये सेक्शन है, ये बोलता है कि जिस इंसान को विटनेस के लिए बुलाया गया है उसका कैरेक्टर कैसा है, उसका रेपुटेशन कैसी है सोसाइटी में, what is his way of living, earning etc. in society. ठीक है. Now section 144. Now this section says that अगर किसी विटनेस को
बुलाया गया है किसी डॉक्यूमेंट को लेके और उसका क्रॉस एग्जामिनेशन हो रहा है, तो सेक्शन 144 के हिसाब से कोर्ट के पास ये पावर है कि वो जिस इंसान ने डॉक्यूमेंट लाया है, प्रोड्यूस करा है, उससे क्रॉस एग्जामिनेशन कर सकती है। नाउ वी विल टॉक अबाउट सेक्शन 145, which deals with the cross examination as to previous statements and writing, which means that जब पहले कोई स्टेटमेंट इन राइटिंग दी गई है तो हम उस स्टेटमेंट को लेके भी क्रॉस एग्जामिनेशन रख सकते हैं। एंड इट इज़ वेरी मैंडेटरी टू रिड्यूस एवरी स्टेटमेंट एट राइटिंग इन लॉ। इसका मतलब है कि अगर कोई बात बोली गई है तो ओरली उसको मान के नहीं रखना है, उसको एक स्टेटमेंट के रूप में, एक राइटिंग के रूप में रखना है एज अ प्रूफ। सो दिस सेक्शन इज़ जस्ट दैट। एंड देन सेक्शन 146 विच सेज दैट क्रॉस एग्जामिनेशन के टाइम पे बस वही क्वेश्चन पूछे जाएं जो लॉफुल है नेचर में। ऐसा कोई क्वेश्चन ना पूछा जाए जिससे विटनेस को मेंटली कोई प्रॉब्लम हो या कुछ भी ऐसा नहीं किया जाए जो अनलॉफुल हो नेचर में। देन सेक्शन 154 gives the liberty to the party of the witness itself to ask questions from the witnesses। मतलब कि जिस पार्टी का वो विटनेस है, ये सेक्शन उसको छूट देता है, लिबर्टी देता है कि वो भी अपनी क्वेश्चंस और क्वेरीज विटनेस से पूछ सकता है। बस दैट्स इट। These sections are the main provisions of examination of witnesses which one should know, or these sections are somewhat enough for a person to know. Now we'll discuss about the principles of examination. It says that through the adverse party's ability to cross-examine witnesses, cross-examination guarantees fairness. Cross-examination is not limited to the other side. If the witnesses become hostile, the party presenting the witness can still ask questions. Without a chief examination, cross-examination is not permitted. Even in the absence of the previous examination in chief, police evidence may be cross-examined if it is biased. The witness may be called at a later time if counsel is not present. If you do not show up for the cross-examination following the chief examination, the legitimacy of evidence may be questioned. The court may step in and ask more questions if there is witness misunderstanding. All things considered, cross-examination maintains the values of impartiality and in-depth investigation and is very unbiased in nature. ये सेक्शन जो है बात करता है आपका प्रिंसिपल क्या है एग्ज़ामिनेशन का। एग्ज़ामिनेशन इसलिए कराई जाती है कि फेयरनेस पता चले, सफाई पता चले कितनी है विटनेस की बातों में, कितने पॉइंट पे उन्होंने सच बोला है, कितने पॉइंट पे उन्होंने बातें बनाई हैं। और जो क्रॉस एग्ज़ामिनेशन है वो बस अपोज़िट पार्टी के तक लिमिटेड नहीं है, अपोज़िट पार्टी तक सीमित नहीं है। मेरी पार्टी भी उनसे क्रॉस क्वेश्चन कर सकती है। मैं भी उनसे ऐसी कोई बातें निकलवा सकती हूँ कि वो मुझे बेनिफिट कर दे केस में। और क्रॉस एग्ज़ामिनेशन का एक बेनिफिट ये भी होता है कि अगर पुलिस ने एविडेंस इकट्ठा करते टाइम कोई सी भी बायसनेस रखी हो तो क्रॉस एग्ज़ामिनेशन के टाइम क्लियर हो जाती है। फिर कि कोर्ट के पास ये पावर है कि अगर उन्हें कोई कन्फ्यूजन है क्रॉस एग्ज़ामिनेशन के टाइम तो वो क्वेश्चन कर सकती है विटनेस को। और क्रॉस एग्ज़ामिनेशन के टाइम
सारी चीज़ें इम्पार्शियल और काफ़ी इन डेप्थ इन्वेस्टिगेशन के बाद ही सामने रखी जाती हैं। ऐसा नहीं होता कि कोई भी चीज़ ऊपर ही ऊपर से है एंड देन पीपल आर जजिंग द केस ऑन इट। ऐसा नहीं है। इट इज़ अ वेरी crucial and very important process of court proceedings. Now here is this quote by Louis Snyder, which says that in cross-examination, as in fishing, nothing is more ungainly than a fisherman pulled into the water by his catch. Concluding examination of witnesses is conducted with the motive of checking the credibility, assess their accuracy, and uncover the inconsistency or biases in the testimony of the witnesses. It is a very important element of adversarial system of justice. So that's the conclusion, guys, that it is a very important part of the system of court, and that's all. I hope you like the video, and that's it. Thank you so much. Keep follow for more.